Hi guys, welcome to Bachelors of Cricket. This is a new show which we are starting. हमारा एक पैशन है क्रिकेट के बारे में बात करने का. अभी सोच रहे हैं कि उसको एक शो में कन्वर्ट करें. सो आज हम लोग सोच रहे हैं कि आज अपना पहला एपिसोड रिकॉर्ड करें. एंड दिस इज वेयर वी आर. आई एम चिराग. आई एम करेंटली स्टेइंग इन लंदन. बट क्रिकेट से बहुत ज़्यादा प्यार है. नौकरी मेरी ई कॉमर्स इंडस्ट्री में है. बट मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने इस क्रिकेट की नॉलेज और पैशन और ओपिनियन को एक हॉबी में बदल दूं, एक ओपिनियनेटेड शो में बदल दूं. तो या और मेरा साथ दे रहा है अंकित. अंकित एंड मी आर फ्रेंड्स फ्रॉम आवर engineering days. That's why we'll see the show is called Bachelors of Cricket because we met in our bachelors. But we've Yeah, been in touch for the last, I don't know, 14-15 years. Solely our friendship was the base was cricket, and then gradually became very good friends of each other. So Ankit, would you want to sort of introduce yourself? yeah, my pleasure. Thank you, चिराग sir, being so आप लोगों को इंट्रोड्यूस तो कर ही दिया है तो चिराग सर मेरे सीनियर हैं तो लेट्स टेक इट दैट वे ओनली आई कॉल हिम चिराग और चिराग सर वॉट एवर आई फील लाइक देखते हैं तो या मेरा नाम अंकित है आई स्टे इन मेलबर्न सिंस लास्ट 4 years आई केम हियर फॉर माई मास्टर्स एंड as चिराग सर said मैं भी बहुत पैशनेट हूँ क्रिकेट को लेके बचपन से ही तो हम काफी टाइम से बातें करते थे यार कि कुछ करते हैं अलग से राइट नॉट जस्ट जस्ट कमेंटिंग ऑन व्हाट्सएप एंड फेसबुक लेट्स डू समथिंग एल्स समथिंग न्यू और समथिंग अ बिट ऑफ द बीट सो हमने ये शुरू किया आज हमारा पहला एपिसोड है और इंट्रोडक्शन में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हाँ मैं मेलबर्न में रहता हूँ क्रिकेट से बहुत प्यार है बीइंग एन इंडियन ऑब्वियसली और यस हमने टाइम भी ये वाला इसलिए चुना है क्योंकि जस्ट अराउंड द कॉर्नर वी हैव द मोस्ट हाइप्ड टेस्ट सीरीज राइट नाउ बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी सो here we are. परफेक्ट. आई थिंक यही दिस इज द यूएसपी ऑफ द शो. एक बंदा रहता है मेलबर्न में, एक बंदा रहता है लंदन में, बट कॉमन कॉमन ग्राउंड इज क्रिकेट. दोनों Yeah. इंडिया से हैं. सो या लेट्स गेट इनटू इट. आई होप ये शो लोगों को पसंद आए. आई होप वी आर एबल टू डू जस्टिस एंड शेयर आवर ओपिनियंस. लेट्स सी. कूल. सो आज का जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने जाते हैं, सो बेसिकली इस शो में हम लोग पिछले कुछ दिनों में और वीक्स में क्या चल रहा है, क्रिकेट की दुनिया में क्या चल रहा है, हमारा क्या ओपिनियन है, वो शेयर करेंगे. सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग विच इज राइट नाउ, लाइक द एसेंस ऑफ क्रिकेट इज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड. And they have recently bought the most expensive Byju's contract for e-learning. Mickey Arthur जो उनके कोच है वो उनको आज अब लैपटॉप से कोच करेंगे. Ankit, what do you think? Is this the future? I have no words absolutely for that event, I mean, मिसबा उलक ने एक पॉइंट भी रेज किया कि दिस इज एब्सोल्युटली अ स्लैप ऑन पाकिस्तान डोमेस्टिक सर्कल राइट हमारे यहाँ खुद के इतने लेजेंड हैं और आप एक एक लेजेंडरी क्रिकेटर को कोच नहीं बना सकते एंड यू आर लाइक इन अ वे बेगिंग टू अ ओवरसीज कोच और आप उनको कह रहे हो कि आप हमें ऑनलाइन कोचिंग दो टिल आई गेस द कॉन्ट्रैक्ट इज टिल 2024 हम्म. even exceeding 23 World Cup. So God knows how it will go, but it is यार very आई एम थिंकिंग कि ऑनलाइन क्लासेस में तो लोग सो रहे होते हैं यार. मतलब अगर पता लग रहा है कि वो कोचिंग कर रहा है और लोग प्रॉक्सी लगा रहे हैं कहीं से वहां पे. exactly. रिजवान प्रॉक्सी मार रहा है बाबर आजम की और बाबर आजम सो रहा है आंख बंद करके. और कोई मुझे गाली दे तो रहा ये है चैट नहीं में. मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो इंग्लैंड से बैठ के राइट नाउ ही इज कोचिंग डर्बीशायर इन हम्म. इंग्लैंड सो वो वहां से बैठ के पाकिस्तान को कैसे कोच करेगा यार वो एक तो वो उसका एक्सेंट समझना भी पाकिस्तानी इसको मेरे ख्याल से आई मीन नो ऑफेंस टू देम बट थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक तो होगा लेट्स पता सी नहीं यार. कैसे मतलब ये लोग चाहते हैं कि इंडिया जाए एशिया कप खेलने उनके देश में. कोच तो आ नहीं पा रहा है. तो हाँ इंडिया का साइड मुझे तो पता नहीं है. और बट मैंने लेट्स सी. आज न्यूज़ देखी कि कहीं तो पब्लिश हुआ है कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं जाती है एशिया कप के लिए तो पाकिस्तान माइट बॉयकॉट 2023 वर्ल्ड कप इन इंडिया दे वोंट ट्रैवल तो मैंने सोचा यार ये पॉसिबल तो नहीं है उनके फाइनेंशियल
चीज़ों सिचुएशन को को। देखते हुए, बट देखते हैं। I mean, yeah, World Cup without Pakistan and India is not a World Cup, but या I'm pretty sure PCB and the sense will prevail, probably, या ऑफ कुछ कोर्स ना कुछ देयर तरीका शुड बी। मिडिल ग्राउंड जरूर या आएगा. बिल्कुल। But hope we need Pakistan in the World Cup, and of course we need the India-Pakistan rivalry. So let's see. वो वर्ल्ड कप का टाइम जब आएगा तब वर्ल्ड कप के बारे में बात करेंगे. जी, बिल्कुल। Uh, एक और नई चीज जो हुई है इस वीक में, दैट वाज द बीबीएल फाइनल. सो अंकित, या यू आर अ बिग फैन of Australian cricket. या That's one thing which I would like to tell about Ankit. He is a big fan of international cricket. मेरे को इतना शायद टाइम नहीं मिलता है कि मैं सब कुछ फॉलो कर सकूं. एंड जी। अंकित जो है ऑस्ट्रेलिया में रहता है, तो इसकी थोड़ा मतलब इंटरेस्ट भी ज्यादा है. सो मे बी अंकित, डू यू वांट टू सॉर्ट ऑफ समराइज या बीबीएल फाइनल श्योर, फॉर अस? श्योर। जैसा चिराग सर ने बोला, वो प्रोफेशनली मेरे से काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हैं, तो he might not get that much amount of time to follow every bit of cricket, but I do. And ऑस्ट्रेलिया में रहने का फ़ायदा है कि अभी लास्ट वीकेंड नहीं, सॉरी, लास्ट इवनिंग, लाइक 24 hours back, we had Big Bash final of this season, and let me tell you guys, it the final was, you know some match it was. पर्थ में मैच था, और रिकॉर्ड अटेंडेंस थी समवेयर अराउंड 54,000. दैट वाज अ रिकॉर्ड अटेंडेंस इन पर्थ स्टेडियम. एंड पर्थ जिन्होंने पूरा डोमिनेट किया फुल सीजन, और जो उनके ओपोनेंट थे ब्रिस्बेन हीट, वो बिल्कुल स्ट्रगल कर रहे थे होल सीजन. देन सम मिड मिड टूर्नामेंट उनके इंटरनेशनल प्लेयर्स आए, लाइक ख्वाजा, लबुशेन, एंड yeah, I think the Matt Renshaw, all three are now in Aussie squad and they are in India. So उन्होंने क्या किया, सडनली मिड टूर्नामेंट आए वो, उन्होंने लगातार 5 या 6 मैच में हेल्प किया ब्रिस्बेन को. दे हेल्प देम टू रीच प्ले ऑफ्स. ख्वाजा ने एलिमिनेटर में सिंगल हैंडेडली उनको मैच विनिंग नॉक दिया और फाइनल में पहुंचाया, बट फाइनल नहीं खेल पाए वो, क्योंकि तब तक दे हैड ऑलरेडी फ्लोन टू इंडिया, राइट? क्योंकि वो इंडिया के वीजा का वेट कर रहा था फाइनल्स के टाइम. Yeah, that was some interesting story for Khwaja. हम्म. Let's keep it for some other time. हम्म. So कल क्या हुआ मैच, एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई थी कल के मैच से पहले, कि पर्थ के वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के न्यूज़पेपर ने एक एक न्यूज़ शेयर की थी, जो कि बहुत वायरल हुई थी कल, पूरे फॉक्स क्रिकेट और इनके लोकल मीडिया में छाया रहा. उन्होंने लिखा था कि पर्थ स्कॉचर्स वर्सेस नोबडीज, बिकॉज Brisbane Heat were absolutely nowhere in spotlight, and suddenly they were in the finals. तो मैच शुरू हुआ और मैं तो मतलब सोच के बैठा था कि it was all Perth Scorchers match to lose, and that's what they were doing. you know एक तो उन्होंने 100 175 रन्स कंसीड हम्म. किए, which is not normal because they have हम्म. pretty decent bowling attack. Or without Labuschagne, Khwaja and Renshaw, Brisbane Heat was already depleted. And इन सब चीज़ों के बावजूद उन्होंने 174 रन कंसीड किए, which is not good with respect to पर्थ स्कॉचर्स. उसके बाद उन्होंने बैटिंग स्टार्ट की, चेस करना शुरू किया, स्टार्ट भी खराब. उनका जो भी अच्छे प्लेयर्स थे, जो भी हाई परफॉर्मेंस प्लेयर्स थे इस पूरे टूर्नामेंट के, बैंक्रॉफ्ट एंड हार्डी, they got out in power play itself. Then their captain came in and he steadied the ship with their wicket keeper Josh Inglis, which is also on the fringes of national team. So we might get to see him play for Australia in next 12 to 24 months. But okay, let's cut to the chase. सब कुछ जब पर्थ वर बैक बैक इन कंटेंशन, और दे वर क्रूजिंग, लाइक उनको लास्ट 5 ओवर्स में 50 रन चाहिए थे, विच इज नॉट सो डिफिकल्ट नाउ डेज, राइट, इन 2020 क्रिकेट. और बिग बैश में एक ये भी कॉन्सेप्ट है पावर सर्ज का, लाइक वी हैव 6 ओवर्स ऑफ पावर प्ले. हाँ, हाँ. बिग बैश में क्या होता है, फर्स्ट 4 ओवर्स पावर प्ले और लास्ट के 2 ओवर बैटिंग टीम पे होता है, दे कैन टेक वेन एवर दे फील लाइक आफ्टर 10 ओवर्स. तो जब टर्नर और इंग्लिश ने पावर प्ले लिया, पावर सर्ज लिया, दे दे took the momentum in their side, and they were absolutely cruising that time. And suddenly इंग्लिश आउट होता है, नेक्स्ट ओवर में टर्नर रन आउट हो जाता है, एंड इट फेल्ट लाइक ओके, नाउ द मैच इज गॉन.
देन सडनली बोलते हैं ना वो फेरी टेल एंड होता है, तो कल जिस जिस बंदे के नाम वो फेरी टेल लिखा गया है, आई थिंक लास्ट ईयर अंडर 19 वर्ल्ड कप में जब इंडिया से, आई गेस आप कंफर्म कर सकते हो, यश धूल कैप्टन था इंडिया का, हाँ, यश दिल्ली का यश जब लड़का। इंडिया जब वर्ल्ड या कप जीती थी, तो आई थिंक लास्ट ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हराया था, शायद फाइनल में हराया था, फाइनल में। आई डोंट हाँ, रिमेम्बर आई थिंक एक्चुअली सेमी। ऑस्ट्रेलिया को फाइनल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फाइनल वाज विद ऑस्ट्रेलिया, जो हम लोग जीते थे बहुत इजीली। ओके, ओके, या तो लास्ट ईयर अंडर 19 ऑस्ट्रेलियन टीम का कैप्टन था वो। हिज नेम इज कूपर ओकॉनली। वो पर्थ का ही बंदा है, लोकल वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन है। और फर्स्ट टाइम मैं कमेंट्री में सुन भी रहा था कि उसके पेरेंट्स आए हुए थे, उसका उसका छोटा भाई भी था, तीनों लोग साथ में बैठे थे। और आप इमेजिन करो, लास्ट उनको शायद 20 बॉल्स पे 45 समथिंग रन्स चाहिए थे। अच्छा, अच्छा। और दो ऐसे प्लेयर्स थे जिनको बिल्कुल भी बैटिंग नहीं मिली थी। एक तो बिल्कुल टीनेजर था, वही जिसका मैंने नाम लिया, कूपर और कॉनली। हम्म, तो बंदे ने जो मारना शुरू किया भाई साहब, इतने जाइजेंटिक छक्के मारे हैं उसने दो, हम्म, और बिल्कुल मैच पलट के रख दिया। और लास्ट में बहुत ही अच्छा मैच था, मतलब अगर आप लोग उसका हाइलाइट्स कहीं भी देख लो, फॉक्स पे जाके देख लो, यूट्यूब पे मिल जाएगा। यू हम्म। विल फील दैट दैट वाज सम मैच। So yeah, नाइस। the BBL had a massive end, so it was very good. आई मीन 175 रन्स अगर फर्स्ट इनिंग्स में हो रहे हैं किसी फाइनल के, और वो चेज हो जाए, तो मैच हैज टू बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर द ऑडियंस, राइट? देयर Exactly, हैव टू बी। exactly. Final में 175 chase करना has to be some chase. Exactly. And just checked Google, obviously I had to. हमने जो अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था इंडिया की टीम ने, वो इंग्लैंड के अगेंस्ट जीता था फाइनल में। इट वाज नॉट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया वाज थर्ड इन द टूर्नामेंट, सो दे डिड वेल, दे वेंट टू द सेमीफाइनल्स। Okay. दैट्स व्हाई आई Yeah. रिमेंबर कि नॉकआउट में मैंने उनको देखा था। Yeah. बट इट वाज इंग्लैंड, सो अपॉलॉजीज देयर। Okay. But yeah, Ankit, very well explained. I think काफी detailed explanation of the World Cup final of the BBL final match. Yeah. And any players to look out for from BBL, जो हमें लगता है कि आपका, यूजुअली मेरा और अंकित का ये डिस्कशन होता है कि कौन सा प्लेयर Yeah. अपकमिंग है, एंड ही शेयर्स हिज, हमारी बेट लगती है कि कौन सा प्लेयर अगले 2 साल में 3 साल में अच्छा करने वाला है। ही यूजुअली हैज अ लॉट टू से about international talent. So Ankit, do you think there is any Yeah, player we I should think watch out if I for? have to put one name, it has to be जो इस साल BBL का player of the tournament हुआ है. His name is Matt Short. He plays Hmm? from Adelaide. और आई थिंक उसका आईपीएल में सिलेक्शन की भी काफी बातें थी इस बार। आई यूज टू हियर इन द कमेंट्री, यू नो, गिली एंड मार्क वो जूनियर, दे ऑल केप्ट डिस्कसिंग अबाउट हिम। बट आई गेस what I got to know in the end that he did not put his name in the auction, IPL auction. So maybe next year we might get to see him. His name is Okay. Matt Short. Big tall guy, right Hmm. hand. Pretty handy offie and a big Big hitter. So hitter. yeah, Like, yeah, we can Aus- see Aus- him in the IPL in next 1 or 2 years. Let's see. He might even भाई, play for Australia. No big deal because he's I mean, good. ऑस्ट्रेलिया नहीं खेला 2 साल, तो सिंगापुर जाके खेल लेगा, फिर वापस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दैट्स हाउ इट इज, राइट? not not everybody is Tim David, no. Yeah. But Matt Short, guys, this is the name you are hearing here, and Yeah, let's see, play 2-3 साल में कहाँ जाता है वो player. yeah, Great. Cool. So we move to the main topic of our discussion today, which is Border Gavaskar Trophy preview. Right? हमने सोचा absolutely. कि this is the right time for us to start this show. मेरी आवाज से आप लोग सुन रहे होंगे कि लंदन में काफी ठंड है। सॉरी, नहीं, सो मेरा गला एक्चुअली पिछले 2 दिन से बहुत खराब है। बट सिंस दिस इज द लास्ट वीकेंड बिफोर द सीरीज स्टार्ट्स, आई थॉट it's imperative that we start the show today. Yeah, yeah. So, yeah, so गले को ध्यान में रखते हुए और साइड में रखते हुए, I thought let's do it. So, yes, Border Gavaskar Trophy. Yes, it is it fair to say that this is one of the most important series in the cricket calendar during this time? What do you think? Yes, I think it is the marquee series alongside the Ashes. But as we see, इंग्लैंड ने रिसेंटली सर्च किया है जब से मकलम उनका कैप्टन बना है, आई एम सॉरी, कोच बना है, आई शुड Mm-hmm. से। एंड द मीडिया इज गोइंग गागा ओवर दैट, द फैंसी मच फैंसी टर्म बेसबॉल। सो लेट्स सी। Baseball. Yeah, baseball, that directly comes from Baz McCullum. So let's see जब वो ऑस्ट्रेलिया को फेस करते हैं इस साल घर पे, because it is very highly anticipated this time around, क्योंकि इस साल I also feel, being an Aussie supporter after India, absolute, yeah, obviously, but I think England might,
might defeat Australia, if I have to be very frank. So let's see. तो हाँ, मैं यही कह रहा था कि एब्सोल्युटली इट इज अ मार्की सीरीज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बिकॉज ऑफ द कंपटीशन वी हैव बीन विटनेसिंग इन लास्ट almost 2 decades now, Yeah. ever since that Bhaji had like I mean, 32 wickets. इंडिया को इंडिया में हराना तो डिफिकल्ट है ही, बट इवन इन Yeah, ऑस्ट्रेलिया इंडिया इज द ओनली टीम which has beaten them in beaten their backyard, Australia in and Australia. Yeah, consecutively twice. I think exactly. I Yes, don't yes, think many countries or many teams in the yeah, world yeah, can boast of that fact that yeah, somebody went there, defeated them, came back and defeated them again, and with yeah, not even our B side, it probably was our yeah, C side, yeah, right? So that way, there's a lot of player heat. There's a lot of competition, right from the yeah. days of Ganguly, Steve Waugh, and Virat Sachin Kohli, and Ponting, Sachin Ponting, Virat Kohli, and all of Steve. Australia, Yeah, you know, yeah, true. and then of course Ashwin and their wicketkeeper captain. I'm forgetting the name. The Alex Switzerland. Carey. No, the guy who wanted to take them to Brisbane. Um, Ah, Tim Payne. Tim Tim Payne. Payne. Yeah, I mean, yeah, यही हालत है ना, उसने ऐसा कुछ कर दिया कि उसका नाम भूल जाए तो ही बेटर है. But yeah, so yeah. that's where it Off. all I is. think That's how you're it you're is. referring to his off the field antics. And on the field as well, right? I mean, you're Yeah, challenging yeah, yeah, us to go to the Gaba, and then Gaba yeah. पे आपका जो हाल हुआ वो तो सबने देखा ही है. Exactly. Matlab, being So being their fortress, they got hammered there. So it was some defeat. exactly. So yeah, this is a four-match series by turns, obviously, but because I think last time COVID हुआ था, तो India had to play twice in Australia, which was good for us because Yeah. we hold Went the on to win. Gavaskar. Yeah. Exactly. So we are holding the Border Gavaskar Trophy since a while now. I think the last time we lost was under Dhoni's captaincy in Australia. Since Yes, then, we have around 2014 or 15, I guess. 15, Just yes, exactly. yeah. जब धोनी took a retirement mid-series and then Virat Kohli Yes. took Yeah. over, Yeah. that was the coming of age series for Virat Kohli as a test Yeah. batsman and as a test captain. Yes. So since then we have not lost it. It's almost 7 to 8 years, and this series has extra importance because this decides the World Test Championship finalists. Australia almost has, it'll be fair to say that they are in the final, right? Unless Yeah. something drastically bad happens, they lose 4-0, and then South Africa wins their series with, I think it's against West Indies, without Yes. dropping any points. Then Yeah. there might be a scenario where Australia may go out, but लगता नहीं है कि वो 4-0 हारेंगे, मतलब जी. but so yeah, that's, and of course South Africa, you never know, right? They have to मेरे win both of ख्याल their से matches. मेरे ख्याल से ये ड्रेस रिहर्सल होना है WTC फाइनल का बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली इट्स गोना बी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सो या I mean, India का scenario भी easy है, इतना difficult नहीं है. So you have to win the series by at least two matches. So it can be, इट or कैन sorry, बी डन it doesn't need to be by two matches. India needs to win two matches and win the series. So it can be 3-1, 2-1, या या 3-0, 2-0. But if it is, let's say, 1-1, 0-1, then or maybe 2-1, then India के chances उनके हाथ से चले जाएंगे, and that totally depends on the other series played between South Africa, West Indies, and Sri Lanka and New Zealand, and what happens there, and then या उससे result final होगा. But as it looks today, it's a three-horse race between India, or maybe a two-horse race between India and South Africa, because Australia is already there, and या India needs to win two matches. So this series becomes very, very important for us, which brings us to the next point, which is what type of pitches do you think India will prepare for themselves to have a chance at Australia? Because Australia is very strong. Ian Healy या says, agar if the pitches are not rank turners, या like what India has been producing in the last 6 to 7 years, where matches are getting over in 3 days, then Australia with this squad has a chance to win the series. या What do you think? आई थिंक जो जैसा आपने बोला कि इंडिया को दो they have to convincingly beat Aussies by a gap of two matches, right? Either two India has love. to win two matches. It's Yeah, not yeah. they So can win 2-1 also. which is very gettable because the last time India lost Test series at home was way back in 2012 against England when that legendary knock by Peterson at Wankhede and 2 or 3 centuries by Cook on Hmm. that tour. That only made India to lose that series in 2012. After that, India, I guess,
Not I guess, I'm sure India has not lost any series at home. I have a very interesting stat here. In the last 42 tests played in India, which probably is almost like a decade, 10 maybe, years, yeah. Yeah. yeah, uh, or maybe even less, I don't know. But in the last 42 tests, India has only lost two tests at home. They have Oh, won really? 34 tests and drawn six. I would like to know I what are those two test matches which India lost at I home in think last. one was with England, जहाँ पे अभी रूट ने डबल सेंचुरी किया था, the first match of the series, अक्षर पटेल के इंडिया में डेब्यू. आगे? हाँ हाँ. So I think that was the series where India lost one match. The first match ओके. against England, where Joe Root scored a double century. And if my memory serves me right, the other match was against South Africa. Oh, sorry, against Australia in 2017, is it? Where Steve और Smith had जब a brilliant series. स्टीव जो ओकीफ ने वो लेफ्ट आर्म आगे जो पांच जो छह विकेट ले लिए थे. ब्रेन He ब्रेन just फेड rolled his हुई. arm over and took 5 or 6 wickets, I guess. Exactly. If you remember the brain fade series, जहाँ पे स्टीव स्मिथ ने Yes, 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 yeah, yeah, yeah. अच्छा, yeah. वही So वाली उसमें. I Oh, think again, I have to check, but I think these are the two test matches which India has lost in the okay. last, I don't know, 42 test matches. So that's a lot Yeah, of uh, home dominance. That yeah, means if the numbers speak well, then the chances of losing are very less. exactly. And if Um, we have to, precisely talk about Nagpur, where the first match gonna take place, if we have to, if we have to check last 5 to 6 matches in Nagpur, I think India's last loss was against South Africa in 2010. yep, So yep. पिछले 12 से 13 सालों में नागपुर में भी इंडिया नहीं हारी है. सो तो नागपुर में 2008 में पहला मैच हुआ था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जो या इंडिया ने जीता था. या उसमें आई थिंक जेसन क्रेजा ने एक इनिंग्स में 8 विकेट लिए थे, 8. यस यस यस, आई रिमेम्बर राइट. दैट मैच. एंड उसके बाद से आई थिंक 6 मैचेस हो चुके हैं. इंडिया हैज हम्म. वन, आई बिलीव, फोर. 4, वन या. ड्रॉन, वन वन ड्रॉन एंड वन वन लॉस लॉस टू अगेंस्ट साउथ साउथ अफ्रीका. अफ्रीका एंड वन ड्रॉ अगेंस्ट इंग्लैंड, आई गेस. एंड लास्ट मैच ऑल्सो took place much, I think 2017 में हुआ था श्रीलंका के अगेंस्ट. या So it's been about 5 years since there has been a match there. Nagpur historically has been a good batting wicket. It's a या sporting wicket. It's not your या rank turner spinning rank turner, because last match जो इंडिया ने जीता था वो श्रीलंका से innings and 230 runs के आसपास से जीता था, जिसमें विराट कोहली scored a double century and India दैट had इज a अ score of कन्विंसिंग 600 विन. plus, right? या So interesting here कि pitch कैसी होगी. But if you look at the four venues which are there this year for the series, they are Nagpur, Delhi, Dharamshala, and Ahmedabad. Out of which we know that Nagpur traditionally has been a sporting batting wicket. या Bit of seam. In the Vidarbha ground. Then Delhi, Delhi, the match can finish in 2 days or 3 days. एग्जैक्टली. आई मीन It मैंने तो हम लोगों ने तो शायद आईपीएल के मैचेस भी देखे हैं जहाँ पे teams have struggled to even chase 130 exactly. 135 in IPL. So we can guess कि कोटला का ट्रैक कैसा खेल सकता है. Slow and रैंक टर्नर, रेज Third टर्नर. match आपका धर्मशाला में होगा, which again is a sporting seeming wicket, but again let's see how much say the pitch curator or the captain of या. India has. And fourth match is Ahmedabad, right? I mean, I think out of all these four, I think the best chance Aussies have in Dharamshala, I guess, because वहां पे सबसे अच्छा सीम मिलने की उम्मीद है, एज पर द ट्रेडिशन. बट जैसा आपने कहा कि कितना से होता है क्यूरेटर का और कितना से होता है इंडियन मैनेजमेंट का कि हमें नहीं रेजिंग टर्नर चाहिए, डस्ट बॉल चाहिए, तो नोबडी नोज. I mean, curator को नौकरी पे आ रही है तो कैप्टन की सुननी पड़ेगी. ऑब्वियसली. We all know what happened to the Lucknow curator या. ओ अभी मैन. recently, या. who lost his job after या. there was a last minute pitch preparation request या. from India, and he prepared a pitch which And was very just difficult. after Hardik Pandya's outburst, next day I got to know that he's been fired. So it Yeah, I was mean, pretty that's how it is. shocking. That's Yeah, how life is in India. yeah, So I think also we have to consider one more thing. Historically, India hasn't been a great starter for a series. हमने कई yeah, बार देखा है कि first match we have lost of the yeah. series. It can be abroad, Correct. it can be in India, and then we come back. Right? Either it's a draw or we lose. Uh, so I think we have to be really careful with the strong side which Australia has. They are an informed team. They are ranked number one. I mean, they are table toppers of the WTC, Yeah, standings as well. So
yes, I believe that the best chance is Dharamshala, but I think with India's knack of starting slow, they have a pretty good chance to also surprise India in Nagpur. But I I feel. think, yeah, good point, sir. But I think just to counterbalance, Australia have their own misery because they're two of the premier pacers, Stark and Hazelwood. They both are out of Nagpur Test match, so their cult hero Scott Boland, he's gonna make his overseas debut, like outside Australia. So I think he's gonna partner Cummins with the new ball, and I think we might see Ashton Ega in playing 11 because of his batting abilities at number 7, number 8, and his kind of some left armers, pretty much similar to what we see with Jadeja and Akshay How Patel. much? How much does Bolland average? Probably 6, 7. Because Yeah, there was a yeah, time when he was just, he's been if the ball that. leaves his hand, he gets a wicket, right? That was Yeah, MCG yeah, yeah. shit, That's right? why he's been hailed as a cult hero here because he hails from Victoria, Melbourne, some regional side of Victoria. So whenever the match takes place in MCG, I mean, उसको तो खिला लो यार, मतलब उसको तो he has हाँ, to play. he's been cheered more than Steve Smith. So you just can imagine how much. He's the Akshar Patel of Melbourne, right? Yeah, Like जैसे yeah, अक्षय you can पटेल say को so. You can अहमदाबाद में say खिला so. लो तो वो अगर बॉल फेंकेगा तो विकेट आएगा ही आएगा. Yeah. So right, cool. So like I mean, you started it. So would you very quickly want to tell us about this Australian squad? Like how does the balance look like? Yeah, sure. What I think which are the players to look forward to? cool. So I think recently हमने लास्ट 2 सालों में देखा है कि अगर if there is someone who took some sheen away from Steve Smith in their batting department, that has to be Manas Labuschagne. He's been highly rated, and I think deservingly he's I guess right now ranked number one test batter right now. So he's gonna be the top two main obstacles for India, alongside obviously Steve Smith. Then uh, Warner and what's his other partner? I mean, I forgot his name, man. Ranshaw? No, no, I don't think he's gonna play in 11. Hmm. Yeah, Khwaja, man. How could I forget his name? अरे यार उसे इंडिया की गवर्नमेंट भूल गई है तुम क्या Yeah. इट्स फाइन उसको उसकी उसकी टीम भूल के चली गई है वो बैठा था एयरपोर्ट पे सो Oh अगर my. ऑस्ट्रेलिया की टीम को ही वो याद नहीं है तो इट्स फाइन अगर हम उसको भूल जाए Correct. वो तो कसम से बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड था बट या get back to the in all fairness, so Khwaja and Warner gonna start for them. Then obviously Labuschagne, Smith, Travis Head. He's been batting really good in last 12 to 24 months. I think without that fancy name of baseball, he's been doing baseball for Australia, right? Whenever by any chance अगर हम देखते हैं कि किसी पिच पे किसी सरफेस पे इवन लाबुशेन एंड स्मिथ स्ट्रगल्ड, वहां पे हम देखेंगे पिछले 2 सालों में ट्रेविस हेड आता है नंबर 5 पे एंड ही स्कोर्स सम 80 runs in 70 balls in test match, and not once not twice, he's done that enough times in last 2 years. So he's been batting really good at 5. Let's see how he copes up against Indian spinners in alien conditions to him, because I don't think he's played in India before. So yeah, करेक्ट he's gonna bat for them at number 5. Then obviously number 6 is the highly regarded, genuine, seeming all rounder Chris Green. कैम कैम ग्रीन Sorry, not Chris Green. He's Cameron Green. Chris Green is another offie. So he's Cam Green. He's also under injury cloud. So as far as my understanding goes, he's not gonna bowl before second test match. So अगर ऑस्ट्रेलिया उसकी बैटिंग पे इतना रिलाई रिलाई तो नहीं बोलूंगा मैं, अगर इतना कॉन्फिडेंट है कि दे कैन प्ले हिम जस्ट एज अ प्योर बैटर, so obviously he's gonna slot in at number 6. The number 7 is the एलेक्स कैरी wicketkeeper Alex Carey. Yeah, and then obviously the match is happening in India, so Ashton Ega would come in at 8 because of his batting handiness, and then 9 the captain Cummins, 10 would be Bolland, and 11 would be the which is seen as their trump card Nathan Lane. So yeah, this is gonna be the possible playing 11 in Nagpur. What's your take, Chirag sir, for आई थिंक Indian 11? इंडियन 11 से पहले आई थिंक आई जस्ट वांटेड टू डिस्कस अ फ्यू थिंग्स फॉर ऑस्ट्रेलिया. Yeah, In the sure. past couple of decades I think we've seen
without Shane Warne, right? I mean, there was this legendary Shane Warne who used to come, but Shane Warne के अलावा every series they come up with a new spinner to India. Nathan एग्ज़ैक्टली, Horitz आ चुका है. या Colin जेसन Miller, ब्रेजा ने 8 विकेट ले चुके हैं, exactly या the मे funky Miller with blue या hair. एग्ज़ैक्टली। Michael Clark 6 विकेटें निकाल के ले गया था. So उसका अगर रेप्लिका स्टीव ओकीफ, अगर आप उसको बॉलिंग करते देखोगे तो आप, मैं आई मीन नो ऑफेंस टू हिम, बट आप हाँ, उसको बोलोगे कि हाउ कुड ही प्ले एट दिस लेवल, एंड ही also came to India and took some 6 or 7 wickets just by rolling his left arm, and so Indian batters were all bamboozled. I mean, इंडिया के साथ दिक्कत यही है ना कि लेफ्ट आर्म स्पिन अपनी है भी अच्छी और अपने खेल नहीं पाते उसको अच्छे से. विराट कोहली के लिए तो आप मतलब ये आप सोचो इसमें चले कोहली जाओ. स्ट्रगल करता है तो आई मीन देन आई हैव नो वर्ड्स। They also have Mitchell Swepson, the leggy, Yeah, I right? think, yeah, they I have think they he's have he's this. a very promising one, and Yeah, Australia usually likes to play with a wrist spinner. yes, So yes. maybe Ashton Agar and Swepson के बीच में it can be a toss-up, Yeah, depending on how the they pitch can is. be, but I don't think he's gonna play in Nagpur. Nagpur at least, because yeah, he's good. Swepson is good. The late Shane Warne used to rate him very high, or And he, Todd Murphy के बारे में कुछ पता है क्या? Like there's a yes, new yes, guy, he, offy young yes. guy. Right now he's been seen as the, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, उत्तराधिकारी है वो नेथन लायन का, बिकॉज अगर आप अच्छा उसको अच्छा बॉलिंग करते देखोगे वो बिल्कुल नेथन लायन जैसी ही बॉलिंग करता है। अच्छा वो नेथन लायन और ग्रीम सॉन का मिक्सचर है। बहुत अच्छा. अच्छी आर्म बॉल है, बहुत टाइट, बहुत टाइडी लाइन एंड लेंथ है उसकी। सो डेफिनेटली ही इज गोना हैव अ सक्सेसफुल कैरियर विद ऑस्ट्रेलिया फॉर श्योर, बट आई डोंट थिंक इट्स हिज टाइम राइट नाउ, बिकॉज still we have Nathan Lyon for them, or Swepson and Todd Murphy have to wait for now. Yeah, When was the last time Australia went to India or any other nation to play cricket and had four spinners, four genuine exactly. spinners in their squad? Looks like they are scared. That's what Looks like India they're does scared, to you. right? I mean, Australia, the homeland of fast bowling, with Exactly. Mitchell Stark and your Hazelwood injured. I mean, that's a big, Yeah, yeah, big setback for Australia. Hazelwood is injured now, of course. so they are also depending on spin. None of their batsmen, if I believe I'm correct, bowl. Steve Smith, of course. I mean, here and there. Uh, No, I think Travis Head bowls off spin, okay, and Labuschagne also quite regularly bowl leg spin. So yeah, they can Labuschagne I've chip in. seen. Yeah, they can chip in if required. But I don't think. I mean, Cummins, Bolland, Nathan Lyon, and Ashton Agar. These four would be their main bowlers in Nagpur. And if they require, then I think Travis Head and Labuschagne would chip in for some 5-10 overs in a day. Let's see. Cool. I mean, strong squad for sure, Australia. एक और न्यूज़ आई थी ऑस्ट्रेलिया की कि they have decided not to play any practice matches, Yeah, right? They have yeah, scuffed off the pitch in Bangalore. yeah. आरसीबी वालों ने बहुत साथ दे दिया ऑस्ट्रेलिया का. एंड वहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है बहुत ही ज़्यादा स्पिनर्स के साथ. एंड सरप्राइजिंगली और मे बी नॉट सो सरप्राइजिंगली दे हैव अ स्पिनर who's a replica of Ashwin. So Exactly. either they are trying to, they're doing a very good preparation, or are they shitting out of their pants? Are they so Yeah, scared? I think I think either ways you can take it. Either it's a smart strategy, to be prepared as solid as they can at the 11th hour, because they don't have any practice match, and you can also say that they are obviously a bit scared against Ashwin. That's why they have to go this path, hire a local rookie. I'm not sure what's his name. You can shed some light on that. Do you have his name? I believe I did. I have to Google it. Let That's me okay, just sir. check. It's okay. No, so this guy is I think 20 to 23-year-old Yeah, person who's bowling to them in nets. I saw the video. It's yeah. pretty similar. But again, the thing is, if I were Australia, I think his name is Pithia, who hails from Junagadh, Saurashtra. Ah, So okay. if I am Australia, I think it's a good choice to play practice matches, also to not play practice matches, because essentially what India can do is give them a green top, to practice, and then a dust bowl In for the the real match. So I match. think, Yeah. yeah, so I think they're being very smart there. जहाँ तक बात है अश्विन के कॉपी की, knowing Ashwin,
he can bowl leg spin in the next match, right? एग्जैक्टली If अगर आप आप मेरे आप को कॉपी, उसका आप मेरे आप उसको exactly, रेप्लिकेट करने की कोशिश करो और वो एक्शन सडनली ही चेंज कर देगा, वो सिलेबस चेंज हाँ कर देगा, आप सिलेबस की मैच तैयारी में करके वो आओगे, आउट ऑफ सिलेबस कर देगा कुछ, राइट? मैच में आके वो सारी कैरम बॉल्स और लेग स्पिन करने लगे हाँ, तो आई थिंक दैट्स, अगेन आप जितनी भी प्रिपरेशन कर लो, देयर कैन नॉट बी इनफ प्रिपरेशन, बट दिस या इज टेस्ट क्रिकेट, करेक्ट राइट? There's a, I mean, the name is Test, so let's see how they fare for the test. Coming to India, no major surprises. I think India is going with the full strength side, barring, of course, an unfortunate accident to Rishabh Pant, which creates a big hole in the middle order. या He being one of our best test players in the last few years, and Jasprit Bumrah is not available. So, but I think India में उनकी कमी इतनी खलेगी नहीं, because we have enough backup as या Seam, for Seam in our squad. आई Uh, थिंक उमेश यादव गोना टेक हिज प्लेस इन प्लेइंग 11 if I'm not सिराज, mistaken. शामी एंड उमेश में से दो लोग खेलेंगे, Yeah, okay. डिपेंडिंग, आई थिंक राज, राइट नाउ शामी एंड सिराज आर अ स्टेप above उमेश. Okay. Umesh can be a good rotating option, and I don't think we are going to go into the series with three seamers. Yeah. There's a very bleak chance of doing that. But again, saying that, I'll come to the playing 11 later. But अश्विन एंड जडेजा अगर साथ में खेलते हैं, तो तीन सीमर्स की जगह टीम में बन जाती है, बिकॉज बोथ ऑफ देम कैन बैट and both of them are world class spinners, right? So it'll be a toss up between Umesh Yadav and the third spinner, which can be Akshar Patel Exactly. um, or Yadav. So going back to the squad, I think it picks itself. Opening के लिए it is Rohit Sharma, obviously. Gill और राहुल के बीच में toss up होगा. Gill has, you know, he's in a purple patch, right? He's in the form of his life. So I it'll be a tough call for the team management to decide if Gill plays as an opener or Rahul plays as an opener. 3-4 is fixed. Pujara, who's coming back from playing domestic cricket for Saurashtra, scored a 90 odd in his last match. Yeah. Kohli, decent form, back to probably his best in the white ball format. Still to see, can he get that elusive century for like in test matches. He's not scored a century for a while in red ball cricket. Again, five is either between Rahul, Gill, or Sky. Sky, surprisingly, or maybe not so surprisingly for a lot of people, is in the squad, Yeah. considering his white ball prowess and form. Uh, Six would be, I think, KS Bharat. Who's Uh, gonna keep wickets for India? I feel Rahul? KS Bharat. I think KS Bharat, Okay. because he's been with the squad for a while, and I think he deserves his chance. Yeah. And Ishan Kishan lately has been off color. I mean, he scored a double century, yes, but outside that, he's been off color. And KS Bharat is definitely a better keeper. Yeah. And I think Indian management prefers a better keeper than a better batsman in the team with all the spinning tracks and stuff. Yeah. So अब जडेजा सिक्स पे बैटिंग करता है कि केएस भरत सिक्स पे बैटिंग करता है, वो देखना होगा, बिकॉज आर टॉप फाइव आर राइट हैंडर्स. सो आई थिंक जडेजा कैन बी सिक्स, भरत कैन बी सेवन, because Jadeja at test level is probably the best all-rounder in the world. Yes. Yes. Eight would obviously be Ashwin. It's a toss-up between Kuldeep Yadav, Akshar Patel, and Umesh Yadav. Umesh Yeah. Yadav for nine, and then 10 and 11 would be Siraj Siraj and and Shami. Shami. So Yeah. pretty strong, I would say, pretty strong. Rishabh Pant ki kami khalegi, but I think we have enough batting depth till like eight if Akshar Patel plays, even nine, right? So to cover that, and I believe the biggest question here would be who among Sky, Rahul, or Gill bats at five. There's a school of thought which says राहुल पांच पे बैटिंग ओडीआई में कर रहा है तो लेट हिम कंटिन्यू. गिल ओपन कर रहा है ओडीआई में तो कंटिन्यू करो. क्यों ओपनर को पांच पे और पांच वाले को ओपनिंग पे भेज रहे हो, राइट? Yeah. देयर इज अ स्कूल ऑफ थॉट व्हिच है स्काई को भेजो, बिकॉज मिड इनिंग इम्पेटस जो ऋषभ पंत देता था वो स्काई दे सकता है. ही इज Yes. गुड अगेंस्ट स्पिन, ही कैन use the gaps, play orthodox and orthodox both kind of shots. And then there's a school of thought which says कि गिल को ease in करो, पांच में खिलाओ, second new ball खेल सकता है because he's an opener, right? But again, मेरा मानना है कि सेकंड न्यू बॉल तक शायद पहुंचे ही ना मैच, कंसिडरिंग हाउ थिंग्स आर इन इंडिया दीज Yeah. डेज. 250 से 300 रन के विकेट बनते हैं, 50 60 70 ओवर में मैच इनिंग्स खत्म हो जाती है. Yeah. सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी अ बिग हेडेक एंड अ गुड हेडेक फॉर रोहित शर्मा and the team management. But yeah, I mean that's where we are. Uh, let's quickly probably go through our predictions. Just close this episode. What do you think? What's your prediction for the series and the match? I think being the first test match and Australia already without their two best seamers,
I don't think they have a chance against India. Even uh, I don't think Australia gonna make any real upset in Nagpur at least. So I think India gonna sail through in Nagpur, and uh, I I might see Australia winning in Dharamshala. To be very frank with you, तब तक हो सकता है स्टार्क एंड हेजलवुड दोनों फिट भी हों और ट्रेडिशनली धर्मशाला offers the most seeming friendly conditions out of all these four venues. So if I have to pinpoint a prediction right now, I would say it would be 3-1 in India's favor, and obviously an Indian victory in Nagpur. Yeah. Got it. And What about any you, sir? uh, Wild prediction? wild prediction? Yes, let's go for a wild prediction. Best पहले batsman, आप best पहले आप bowler. पहले आप सीरीज की प्रेडिक्शन दे दो फिर वाइल्ड वन फ्रॉम मी वन फ्रॉम यू Uh, Honestly, my heart says 3-0, बट इंडिया में ड्रॉज होते नहीं है आजकल, तो हाँ चारों मैचेस में रिजल्ट आएगा, जहाँ तक बारिश के मुझे लगता है। चांसेस भी नहीं है शायद इस टाइम कहीं भी नहीं नहीं तो नहीं, बारिश तो हाँ, कहाँ ही, पूरे पूरे मुझे दिन नहीं लग लगता जाते हैं ड्रॉ इंडिया में। होगा यार तो 100% आई चारों थिंक के रिजल्ट आने चाहिए 4-0 मैं बोलना नहीं चाहता, आई वांट टू रिस्पेक्ट ऑस्ट्रेलिया या अ बिट। सो यस, आई थिंक 3-1। स्टीव स्मिथ और लाबुशेन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। इट्स नॉट अबाउट द विकेट्स, इट्स आल्सो अबाउट द रन्स, राइट? इंडिया की एब्सोल्युटली बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है। इफ दे कैन गेट somebody who can survive, and I believe in this team there are only two people who are world class, uh, Steve Smith and Labuschagne. If they can survive and they can score runs, India can be put under pressure. Don't forget, no matter how good we are against spin, in the last 10 years, we've seen our team collapse a lot against even half दैट्स quality spin, right? आई वाज जस्ट अबाउट टू कम ऑन दिस पॉइंट कि मैंने 3-1 बोल तो दिया इंडिया के फेवर में बट पंत नहीं है गॉड ब्लेस हिम बट पंत जो कर रहा है पिछले 2 सालों से हमने सबने देखा है जब भी इंडिया का टॉप ऑर्डर स्ट्रगल किया है ही जस्ट comes in at 4-5 and just suddenly changes the momentum of the match by coming down the track and hitting over the top sixes against Leach, against Lyon, against any spinner. So अब पंत नहीं है तो I'm not sure who's gonna take Nathan Lyon under pressure और मुझे कहना I mean, नहीं एक चाहिए आप बट Indians as a batting unit they have as you rightly mentioned उन्होंने खुद बहुत स्ट्रगल किया है स्पिन के अगेंस्ट पिछले 10 सालों में जब से द फैब फोर हैव hung their boots उसके बाद से चाहे आप पुजारा ले लो पुजारा कैन होल्ड एन एंड बट ही कैन नॉट पुट एनी bowlers under pressure he just survives and prepare the ground for the likes of Kohli and Pant to flourish. But अब पंत नहीं है और कोहली भी स्ट्रगल करता है being his high standards. But let's see क्या होता है. But I have some doubts over Indian batting to be very honest. हारेंगे तो नहीं यार, इंडिया में तो हाँ एक मैच हारना जीत तो नहीं सकते हैं, चाहिए. सीरीज हारना इम्पॉसिबल सा लगता है। Yeah, अगर हारे तो we will come back to this show and obviously discuss why and scrutinize. Obviously, that's how the Indians are, and that's how we would do it. sure, But so yeah, that's the series. Who do you think is the bowler and the batsman to watch out for, and what's your one wild prediction? cool. So my I think okay, I'm gonna take one batsman with most amount of runs, and that has to be Steve Smith, obviously. Out of all, I mean all the players involved, even Indians. So my pick would be Steve Smith to score maximum runs, uh, Ashwin to take maximum wickets, and I think my one wild prediction is uh, Marnus Labuschagne to score a double hundred at least in one of the four matches. You've very closely picked what I would have said in terms of wild Ah, prediction, okay. but I'll probably do something else now. Uh, I think it'll be an interesting battle to watch out for between Steve Smith and Ashwin. So my wild prediction would be Ashwin coming on top and Okay. probably dismissing. So there are 8 innings they will play each other. Yeah. Let me be wild here and say Ashwin will dismiss him at least 4 times this series. Ah, Right? it's not I don't wild. think For wild, I you don't have think to.
I You don't have think to. Steve Smith will have a big series. Okay, that's my Okay, wild prediction. I don't think he'll have a big series. okay. Probably 100 here and there, but by Smith standards, 100 in a four-match series is a failure. Yeah, Currently, where he is, uh, but I think India will have Ashwin will have a stranglehold on him. Um, Batsman to watch out for, being a Kohli fan, for me would always be Virat Kohli, though he's yeah. struggling against spin. But I believe I want to see one century from him at least in this I format. He's done think that in a couple of formats now, so this one is pending. I think he's had a dismal record in Test cricket in last 3 years. I think This he's is the time for averaging him to make it somewhere in better. twenties without any century. बट लेट्स सी अभी वो रिसेंटली हरिद्वार होके आए हैं अपनी धर्म पत्नी के साथ और कौन से वो बाबा हैं नीम करोली बाबा Mm. इफ आई हैव टेकन द नेम करेक्टली तो वहां भी होके आए हैं वो भाई साहब भंडारा खिलाया उन्होंने 50 सेंट्स को आई गेस जहां तक मैंने मुझे याद है न्यूज में तो देखते हैं कितनी ब्लेसिंग्स उनकी ऑन द फील्ड उनके परफॉर्मेंस में दिखती है And I'm sure Kohli has a point to prove, and whenever या he does, या he does prove it. Bowling में, I'm not sure Akshar Patel will play all the matches, but for me he's the bowler to watch out for. क्योंकि राघव एवरेज उनका 12-13 के करीब है. Sir, if he's not Uh, gonna play, then how can he be a नहीं नहीं, bowler he to will. I'm watch not. out for? India will play him, Yeah, irrespective. I'm not saying he'll play all four matches, but India will play him wherever there's yeah, half a chance of yeah, spin exactly. instead of third. I think I two think, seamers and three yeah, spinners is the way to go, exactly. That's what I was gonna coming and at. I believe he will provide better. He just turns it enough. कभी कभी Yeah, कम टर्न ज़्यादा important होता है. Most of his wickets are LBWs or bolts. So yeah. I think Akshar Patel को उसका फायदा होता है. So for me, Akshar Patel, Virat Kohli, 3-1 series, and my wild prediction is that Steve Smith will not have a good series and Ashwin will have a better of him. So that's my prediction. And बाकी 9 तारीख को मैच है. uh, अंकित के लिए मैच शाम को स्टार्ट होगा, मेरे लिए मैच सुबह 4 बजे स्टार्ट होगा. We will try our best to watch as much as we can, Yeah. and maybe in our next episode provide you with the summary of the first test match. First test match, I think. Yeah. Yeah. And guys, before we finish this, ये हमारी बस जर्नी की शुरुआत है और just to clear with you guys, Chirag is a big football nuffy, and so do I, but not in football, but in tennis. So if everything goes well, हम बहुत सारी चीजें कवर करेंगे. Not only we gonna stick to cricket, but he can he can chip in with football. I can chip in with tennis. So it's gonna be a lot of fun. So stay Yeah, tuned, guys. we're just starting. Let's see if you like it. Let us know. You can like it on the platform, and of course, share your feedback with us personally or on comments, and then we will try to work on it. But thank you so much, Ankit, and thank you everybody for attending and listening out to this first episode of the Bachelors of Cricket. And let's see what we can do from here. Sure.